Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And today we are going to start the new chapter of English which is Bond of Love. Uh, now here is a question for all of us that now here is a question for all of you that have you kept any pet, and if you have kept any pet, there is a relationship of love, friendship, care among this the human beings and the animals, pet beings. So, in this chapter, we are going to learn about the friendly, lovely relationship between a sloth bear, a wild sloth bear who was kept as a pet in the author's house. Now, before we start, who are the sloth bears? Sloth bears inhabit forested areas. So sloth bears are found at forested areas, including the tropical rainforest of India and the grasslands at lower elevations. Sloth bear. Now, what is the characteristic features of sloth bear? That sloth bear have very shaggy hair, long muscles, and the small cubs of sloth bear looks very cute. Then using their claws, and they can also by their claws or by their nose type structure, they can also dig a pit. Yes, by their claws they can start uh, digging the pit, and through their nose they just make an hole and make a small pit in the ground where they can also use their lips to form a tube, which I just told you. The lips नहीं है ये, actually पूरा nose and mouth इसका पूरा area की बात हो रही है, which can go deep into the ground or into hard to hard reach areas where dead trees of their food. Their main food. Now, what is the main food for these sloth bear? These sloth bear eats termites, and in this house, and in every in wherever house whosoever is keeping a pet of sloth bear, a sloth bear as a pet, in that house termites will be no, not the number of termites will be less, or say no. So as they eat termites, if they are um, kept freely in the house and given no food, no water, and one day for one day, they can also survive. Why? Because they can eat termites. Natural food hai. You can hear them suck up their food from several feet away. Now they can also smell up like dogs, like other insects, like frog, like other. They can suck up their food from the several feet away. Now let's begin the chapter. And in this chapter, the poet is also saying that I will begin with Bruno, my wife pet sloth bear. लेकिन इधर चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि it was and sloth bear are the wild animals. We can't kept them as a pet, but they have kept as a pet, and they got sloth bear by an accident. Now, what happened that 2 years ago, the narrator, the author, and his companions were going, and they were passing through the sugarcane fields, and which was near Mysore. People were driving away with the they were driving away. Why? Because in the sugarcane field, wild pigs had attacked, and for those, this author and his companions were shooting at them. Now, some were shot and some escaped. तो escape होके वो कहाँ जाएंगे? Out of the field. वो भी सही था. Shot हुआ, वो भी सही है. But suddenly what happened? A black sloth bear came out, and it was a hot sunny day, and he was very tired, very weak. He was just ऐसे वीकली ऐसे चल रहा था बड़ा. और नरेटर मतलब ऑथर और इट्स हिज कंपेनियंस डू नॉट have feelings, and they just shot it also. But what happened at a spot that they watch a fallen animal. मतलब जब उस बिग स्लॉथ बेयर को उन्होंने देखा, तो दे रियलाइज दैट इट वाज अ मदर. अब
वो उनको इतना सरप्राइज ये हुआ कि उसकी पीठ पे, उसकी बैक पे एक छोटा सा उसका बेबी स्लॉथ बेयर बैठा हुआ था. और इन दिस फिगर वी कैन सी हाउ फरी आर दे. So, at a very much distance, they can't see the small sloth baby bear, and they shot the big bear, the big sloth bear. Then they saw that it was a baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shot had killed her. The little creature ran around its prostrate parent, making a pitiful noise. Pitiful noise सब babies निकालते चाहे they are of dog, cat, now here bear, तो all make a pitiful noise. Here it also made a pitiful noise. Then narrator or author, he ran up and he wanted to capture it. He wanted to keep it as a pet. And at last it was also success. But अभी वो इतना छोटा था और वो बहुत शरारती था, तो इसीलिए वो उसके हाथों में नहीं आया. Then he followed it with his companions, but no one was interested, only the narrator was interested. And at last the narrator was only able to grab it by the scuff of its neck. That he grabbed that small baby bear by his neck, not by his hands, by his chest region, no, only by its neck. उसको उसके neck से उसको पकड़ लिया, then उसको अच्छे से पूरा grab किया. While the narrator was uh, uh, this grab it by the scuff of his neck, the baby bear snapped and tried to scratch him with his long hooked claws. Now in this figure we can also see the long hooked claws of ye sloth bear. All the features we can see in the sloth bear, and they are black, furry, we all know. By this incident we can, and in this chapter there are so many incidents. There are four incidents. First, the starting incident, then two incidents, what happened with this small baby Bruno, or you can say Baba, and the last incident at making of the island. It's a very good and interesting chapter. Then the narrator ran up, he capture it, and he finally captured it. Then he put the small uh, baby bear in a gunny bags that they had brought with them, and he got back to Bangalore as his duly presented, and he duly presented it, that small sloth bear, to his wife. Then he was also very delighted. She at once put a colored ribbon around his neck, and after discovering that the cub was a boy, she named him as Bruno. Christian is naming ceremony, or you can say naming, uh, like नाम रखा उस बेबी का, तो उसका नाम रखा इन्होंने ब्रूनो. देन अर्लियर आई सेड दैट ब्रूनो और बाबा, तो ये बाबा कौन था वो भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. Bruno soon took drinking milk. Now Bruno, जैसे जैसे he was growing, he also started eating and drinking everything else. मतलब every second thing वो खा पी सकता था, मतलब everything वो खा पी सकता था. Now he don't know कि ये उसके लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन हाँ वो खा लेता था. Then and everything is a right word for he. Now he वो क्या क्या खाता था? He ate porridge, and specially made up of ingredients, vegetable, fruits, nuts, and if meat was there, so only pork. Pork वो खाता था मीट के तौर पे, अगर उसको porridge खाना होता था तो. Then कड़ी, राइस, और राइस वो खाता था अगर उस राइस के अंदर अगर चिली हो, चिली, कॉन्डेमनेट्स, ये सब उसको अच्छे नहीं लगते थे राइस के अंदर. ऐसा नॉर्मल राइस वो खा लेता था. देन ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम एक्सेट्रा, और स्वीट्स वो भी खा जाता था. और अगर हम ड्रिंकिंग की बात करें तो वो ड्रिंक क्या क्या करता था? मिल्क, वाटर, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरिएटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल, लिक्विड, एंड इन फैक्ट एनीथिंग लिक्विड. यहाँ तक कि वो एक इंजन ऑयल भी पी गया था. उसका भी इसमें इस चैप्टर में
है गिवन नेम. Then the bear became very attached. Now उसके relationship बता रहे हैं. The bear became very attached to our two Alsatian dogs. मतलब अब उनके घर में दो और dogs थे that were of Alsatian breed. उन दोनों को भी उन्होंने घर में रखा होता है. एंड ही ऑल्सो केम वेरी अटैच टू द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स. जो उनके रेंट पे, उनके बंगलों पे रेंट पे रह रहे थे, उनके बच्चों के साथ भी उसका बहुत अच्छा रिलेशन था. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep on our beds. वो हमारे उसका एक अलग सा एरिया बना होगा सोने के लिए, लेकिन वो उधर नहीं सोता था. वो यूजुअली ऑथर के बेड पे आके सो जाता था. Then one day, and now what happened now? From here accidents are starting. कि कैसे कैसे उसके साथ एक्सीडेंट हुए. Now, first of all, what accident happened, that one day an accident befell him. The narrator had put down poison for rats, to kill the rats, and that was of barium carbonate. Barium carbonate is used to kill the rats and mice. That had got into his library. That means narrator was having a library in his bungalow also. Then he put down the poison, and Bruno entered the library. As we all know that Bruno can eat and drink anything around him, he also ate the poison, but all not all, only a little bit of poison, and it paralyzes him at every second. At any second he paralyzes it on the extent that he couldn't stand on his feet. Now he couldn't stand, and he just lie on the floor. Now he what happened, he dragged himself from his stumps, from his thigh hip region to his wife. Then he just dragged himself to his wife. Then later the wife called narrator. Then narrator can guess what happened to Bruno, but his wife can't, because his wife don't know that he has gone into the library and what happened to him, but the narrator can guess. The narrator rushed to his car and he rushed to the vet's residence. The vets, we all know, the doctor of pet animals or normal animals. Then it was a case of poisoning. Tame beer, barium carbonate, what to do? Then out came his medical books, and now the doctor take out his medical books, and feverish reference to index begin. What poison did you say, sir? Then he said barium carbonate. Then he searched, the doctor searched, index में कहाँ है? Yeah, barium carbonate. Yeah, I have found it, barium carbonate. So अब उसने पेज निकाला. Then he said that the symptoms are of paralysis. Then if you want treatment by injections, we can give. Just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. Then a dash back. Then the narrator dashed back to the car. Then Bruno was still fluttering, still struggling to move. वो मूव करना चाहता था लेकिन नहीं कर पा रहा था. उसको अपने स्टम्प्स पे ही मूव करना पड़ता. वो थोड़ा छोटा था, तो नरेटर कैन ऑल्सो पिक हिम. देन क्लियरली वीकनिंग रैपिडली. धीरे धीरे करके उसकी वीकनेस और रैपिड होती गई. देन ही ऑल्सो स्टार्टेड वॉमिटिंग, हैवी ब्रीदिंग एंड हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ. जैसे हम तो यॉन करते हैं, लेकिन वो ऐसे जैसे हम बहुत थक जाते हैं, हम जैसे वो करते हैं ना, हम तो थक जाते हैं, हम तब करते हैं, लेकिन उसको बहुत प्रॉब्लम होती है. हाँ, वो अपनी एनर्जी भी उसकी वेट हो रही ना. उसका ट्रीटमेंट कैसे हुआ? उसको अ लॉन्ग निडल, एक इंजेक्शन, जो जैसे हमारा इंजेक्शन लगता है लेकिन थोड़ी छोटी निडल का होता है, उसको बड़ी निडल लगी थी. तो एक लॉन्ग निडल ली थी और वो ब्रूनो को 10 cc की थी. And that antidote entered his system without a drop being wasted. 10 minutes later, no condition was unchanged, but then another 10 cc injected was also there, and after 10 minutes from starting, after 20 minutes, then breathing less, the breathing जो थी वो लेस होने लगी. एंड ब्रूनो अपने हाथ और पैर हिला सकता था, लेकिन वो अभी तक खड़ा नहीं हो सकता था. ही कांट स्टैंड येट. Then after 30 minutes later, what happened, that Bruno gets up and he also starting eating anything around him. Then by disdainfully, मतलब बहुत प्राउडली, वो अपने आप से, मतलब नरेटर और डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि वो हमें ऐसा बोलना चाह रहा है, लेकिन वो एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा था कि व्हाट्स दिस बैरियम कार्बोनेट टू दिस बिग ब्लैक बियर लाइक मी. और ब्रूनो अभी तक खा पी रहा था. So this was the first incident.
देन सेकेंड इंसिडेंट में क्या हुआ, एट द सेकेंड इंसिडेंट what happened that another time he found nearly 1 gallon of old engine oil. now वो ऑयल पी गया बट इतना कोई इल इफेक्ट हुआ नहीं वट एवर उस पर, लेकिन हाँ, और वो कैसे हुआ था, क्योंकि नरेटर हैड ड्रेन ऑथर हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द स्टम्प ऑफ द स्टूड ब्रेकर एंड वाज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ टर्माइट्स। ये भी टर्माइट्स के लिए था, इसलिए शायद इसको कुछ हुआ नहीं क्योंकि ये खुद टर्माइट्स को खा जाता था। देन मंथ्स रोल्ड ऑन, मंथ्स निकलते गए, ब्रूनो बड़ा होता गया, साइज में बड़ा होता गया, और फिर अब उसके लिए सब थोड़े छोटे, और उसके लिए सब अब डिफरेंट होने लग गए थे क्योंकि कि वो ही ग्रू अप वेरी ओल्ड, इतना ओल्ड हो गया था कि लोग अब उससे डर रहे थे। उसके टेनेंट्स के छोटे बच्चे जो उससे पहले बहुत प्यार से खेला करते थे, अब वो उसके साथ नहीं खेलते थे। तो अब खेलते खेलते तो उसका नाम ब्रूनो ब्रूनो रख दिया, लेकिन अब तो ब्रूनो था नहीं, तो अब उसका नाम देन दे चेंज, देन ओनली हिज वाइफ चेंज्ड his name from Bruno to Baba. And what was Baba? Baba was an Hindustani word signifying small boy. And चाहे वो कितना भी बड़ा हो गया हो, लेकिन उसकी वही स्वीटनेस, मिस्चीवियस और प्लेफुलनेस सब उसकी अभी भी वैसी ही थी जैसे वो छोटा था, सब उसका वैसे ही था। Then he can do also some tricks also. He could do a few tricks too. Like whenever the command that Baba whistle, Baba box, वो तभी भी वो wrestle, कभी भी वो किसी को जो भी उसके सामने होता था वो like he tackled anyone and he came forward with a rough and tumble, मतलब उसके साथ like just लड़ाई के पोजीशन में खड़ा हो जाता था। Give him a stick, और अगर आपने उसको एक स्टिक दी, उसकी फेवरेट स्टिक, तो और फिर आप बोलो कि बाबा होल्ड अ गन, तो वो ऐसे स्टिक को पकड़ता था जैसे गन उस सामने वाले के ऊपर पॉइंट हो रही। एंड इफ़ वी आस्क हिम बाबा वेयर इज़ द बेबी, तो फिर अब वो क्या करता था, उसने एक्चुअली अपने उसका जहाँ पे उनका उसका रहने का या उसका एक अलग सा एरिया बनाया होता, वहाँ पे उसकी ये स्टिक, उसकी बॉक्स वगैरह रखे हुए थे, और वहीं पे ही एक स्ट्रॉ बेड बनाया हुआ था जिसके ऊपर एक बस एक वुड का टुकड़ा था, वुड का टुकड़ा रखा हुआ था, और वो उसे अपना बेबी मानता था। तो अब वो उसको उठाता था बड़े प्यार से, लाइक रियल चाइल्ड, वो उसको उठाता था और सामने लेके आता था कि दिस इज़ माई बेबी। बट बिकॉज ऑफ इट्स टेनेंट चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू केप चेन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि अब उसके बच्चे रेंट पे थे, वो तो कभी भी आगे ऊपर नीचे हो सकते थे, तो इसीलिए उन बच्चों की वजह से उस, क्योंकि ब्रून बाबा जो था वो उनके पास प्यार के लिए आता था, वो उनको अभी भी वो उतना ही मिशीवियस, उतना ही प्लेफुल था, लेकिन अब वो ब्रूनो बड़ा हो गया था, बाबा बड़ा हो गया था, तो इसलिए दोनों जितने भी टेनेंट्स के चिल्ड्रन थे वो सब डर रहे थे, और इसलिए उसको चेंड होना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम। देन उनका सन और नरेटर खुद, ऑथर खुद, उसने एडवाइस किया अपनी वाइफ को, और फ्रेंड्स भी आए, उसके कंपेनियंस वगैरह सब आए, बोलते कि अब बाबा को जू भेज दो क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो गया है और उसको तुम लोग घर पे नहीं रख सकते। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट said okay. Then hesitantly she was very crying and she was very sad, and अब उसका अचानक से माइंड चेंज ना हो जाए, तो अ लेटर वॉज रिटन टू अ क्यूरेटर ऑफ द जू। क्यूरेटर इज़ अ पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू। तो एक इंचार्ज ऑफ द जू को लेटर लिखा गया कि डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फ्रॉम हिज कलेक्शन, एंड the reply was yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry. Lorry is like a small truck. Hmm. Lorry is like a small truck. Then a distance of 87 miles, and Baba was packed off. मतलब कि 87 miles का distance था from Mysore to this your Bangalore. After that, friends, देन अब वो सब उससे मिस कर थे, उसकी वाइफ वो सब, और वाइफ की क्या हालत हो गई थी, वाइफ वॉज वेरी इनकॉन्सुलेटेड, देन इनकॉन्सोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज, शी वुड नॉट ईट एनी थिंग, एंड शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, हाउ वॉज बाबा, बाबा केम, देन बैक द रिप्लाई केम दैट वेल बट ही रिफ्यूजेस टू फूड टू। बाकी सबसे मिलता है, वो जू में जो भी आते हैं उन सबसे मिलता है, सबसे खेलता है, लेकिन
थोड़ा उदास रहता है और वो खाना नहीं खाता है, बस दोनों के सेम कंडीशन हो गया। फ्रेंड्स विजिटेड मैसूर एंड फ्रेंड्स अब मैसूर जा रहे थे किसी काम के लिए, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है हम भी उन्हें दिखाते हैं बाबा को। तो वो भी यही बोलते थे कि बाबा तो अच्छा है, बात करता है हमसे, लेकिन वो खा नहीं रहा है, खा पी नहीं रहा है, क्योंकि साइड पे इतना सारा खाना पड़ा है। वो फ्रेटिंग है, वो ही वॉज फ्रेटिंग। देन 3 months लेटर उसकी वाइफ ने बोला कि मुझे मैसूर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई वॉन्ट टू सी बाबा, इधर यू टेक मी फ्रॉम द कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और अ ट्रेन। और अब उसको ये चाहता नहीं था कि वो बस या ट्रेन से जाए, तो इसलिए ही सेड ओके, नाउ यू विल गो बाय अ कार। फ्रेंड्स हैड कंस्ट्रक्टेड दैट द बियर वुड नॉट रिकग्नाइज हर। उसके फ्रेंड्स ने गेस किया कि बियर उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, और नरेटर को भी यही लगा हाँ शायद नहीं कर पाए। लेकिन पापा जैसे ही उसको देखा, देखते ही वो उसको रिकग्नाइज कर गया ऐसी, और वो इतना खुश हुआ, ऐसे होल्ड हुआ इतना खुशी से। और उसकी वाइफ, शी ran to him, petted him through his bars and stood him as on his head in a delight. For the next 3 hours, she could not leave the cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice cream, and whatnot. Then closing time came, and we had to leave. Then they had to leave. Then my his wife cried bitterly. Baba also cried bitterly. Even the hardened curator and the keepers felt depressed. As for him, he reconciled himself. What I knew was going to happen next. देन अब नरेटर या ऑथर जो भी है वो रिकग्नाइज कर गया कि हाँ अब उसकी वाइफ क्या करने वाली, एंड दैट हैपेंड इटसेल्फ। दो ये जो उसकी वाइफ थी, हिज वाइफ गॉन टू द क्यूरेटर। देन ही सेड, ओ प्लीज सर, she asked the curator, may I have the barber back? Hesitantly he answered, madam, he belongs to the zoo and is now a government property. I can't give away government property, but if my boss, the superintendent Bangalore, agrees, certainly you may have him back. They followed the return journey to Bangalore and visited the superintendent's bungalow. A tearful pleading, Baba and I both are fretting for each other. Will you please give him back for me? Then the superintendent bungalow was a kind-hearted man and consented. He said okay. Then he write a letter to curator and said that you can transport Baba from here to Bangalore. Then the cage was setted for their return journey, and Baba was our gadi. The car was very slowly and carefully driven, and was the journey from Bangalore was accomplished. Return journey. And then once home, a squad of coolies were arranged for special work in our compound and their compound. And the last incident of an island was made for Baba, because Baba was very huge, very strong in height, very big in height. So a 20 feet long and a 15 feet wide pit was there. It was made for Baba, and it was surrounded by a dry pit or moist or moat, 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed falls was brought and put onto the island. Now his all favorite thing, the box, the gun, the stick, वही सब उसका बेबी वगैरह सब रखे हुए थे वहीं पे उसके लिए, ताकि वो उनके साथ खेले। और अब अब इन फ्यू डेज कूलीज होस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज। पहले क्या था कि वो आइलैंड के अंदर बंद था, सिर्फ एक छोटे से आइलैंड के अंदर वो बंद पड़ा, एक ही जगह पे था केज के अंदर। बाद में उस केज को निकाला गया और फिर वो थोड़ा थोड़ा घूमने भी लग गया केज, मतलब आई मीन आइलैंड पे। Then he pointed his guns, baby वगैरह। Wife spent hours sitting on a chair while he sat on her lap. He was 15 months old now and a pretty heavy too. मतलब कि उसे 1 साल 3 महीने हो गए थे। The way my wife now, his wife, how she reached the island, that and her reaching and leaving was very interesting. Then उसकी वाइफ ने कहा कि you have to tie the rope. Then he
tied a rope in a that way, like a overhanging branch of a mango tree, and it was having a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the another to bridge the 6 foot gap. वो ऐसे पार करी थी पता ही नहीं चलता था. Width of the surrounding pit. The return journey was also in the same way. But who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory, and no individual characters? This story was written by Kenneth Ederson, and I hope you very liked, and it was a very easy chapter, but the incidents were very interesting, very important. They are interesting and important too. They are easy to learn, but yeah, you have to learn this chapter. Bye, and we will come up with a new chapter with a new topic. Bye.